In the name of Allah, most beneficent and most merciful. I hope you all are good and healthy. So in this video of today, we will be learning 9th class lesson number 7, the two bargains. First of all, what is bargains? Bargains सौदे, लेन देन, कारोबार, the two bargains यानी कि दो सौदे, लेन देन. सो आज का जो हमारा टॉपिक है 9th क्लास के लेसन नंबर 7, the two bargains कि दो सौदे. हम इस लेसन नंबर 7 के जो डिफिकल्टी वर्ड्स हैं वो सीखेंगे. तो वीडियो से शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि जब भी हम नई वीडियो पब्लिश करें ताकि आप तक बसानी पहुंच जाए. चलो शुरू करते हैं. 9th क्लास लेसन नंबर 7 जो सबसे फर्स्ट वर्ड है फेच. फेच लेकर आना, फेच हासिल करना या रासिल करना. फेच हासिल करना, लेकर आना. सेकेंड वर्ड है अप्राइज. अप्राइज, अप्राइज्ड, अप्राइज्ड खबरदार होना किसी चीज से, आगाह करना पहले से. अप्राइज खबरदार होना या आगाह होना. परचेस. परचेस, परचेस खरीदना, मोल लेना या हासिल करना. परचेस खरीदना. डेडिकेटेड. डेडिकेट, डेडिकेटेड, डेडिकेटेड वक्फ शुदा, नाफर करना. डेडिकेटेड वक्फ शुदा. एंडोमेंट. एंडोमेंट, एंडोमेंट चंद, चंदा. हदिया, अतिया, एंडोमेंट चंदा. एग्जिट. एग्जिट मौजूद होना, जाहिर होना, वाक़या होना या वाक़या होना. एग्जिट मौजूद होना. फेमेन. फेमेन कहत. फेमेन कहत साली, किसी चीज को कम होना. फेमेन किसी चीज को कम होना या कहत. हार्डशिप. हार्डशिप सख्ती से, दुश्वारी से, बदनसीबी से, मुश्किल से. हार्डशिप मेहनती से. स्टॉक. स्टॉक जखीरा जमा करना. स्टॉक जखीरा जमा करना. डिक्लाइन. डिक्लाइन, डिक्लाइन, डिक्लाइन जवाल पजीर होना. डिक्लाइन जवाल पजीर होना, नीचे आ जाना. राइज. राइज, राइज मुज़ाहमत करना, बुलंद होना, ऊंचा होना. कामलीब. कामलीब ठंडे दिल से, कामली इत्मीनान से, कामली सुकून से. स्केयर. स्केयर कलील, कमी. पैराडाइज. पैराडाइज बागे रिजवान. बागे रिजवान यानी कि बहिश्त, जन्नत. डिस्ट्रेस. डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस तकलीफ देना, मुश्किल में डालना, बदनसीबी, दुश्वारी. डिस्ट्रेस
سو ایک بار پھر ہم اس تمام ویکیبلری کو اچھی طرح سے نظر ثانی کرتے ہیں. ڈسٹریس تکلیف دینا، پیراڈائز باغ رضوان، اسکیئر قلیل، کاملی ٹھنڈی دل سے، رائز مزاحمت کرنا، ڈکلائن زوال پذیر ہونا، اسٹاک ذخیرہ جمع کرنا، ہارڈ شپ سختی سے، فیمن قحط، ایگزٹ موجود ہونا، انڈومنٹ چندہ، ڈیڈیکیٹڈ وقف شدہ، پرچیز خریدنا، اپرائز خبردار ہونا، فیچ لے کر آنا. تو یہ لیسن نمبر 7 دی ٹو بارگینز، اس کے جو ڈیفیکلٹی ورڈ ہیں یہ ہم نے بہت اچھی طریقے سے اور بہت ایزی طریقے سے سیکھ چکے ہیں. تو چلو ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.